Today we are going to discuss about the values of R. Values of R. Now what is this R? R is the universal gas constant. R, it is the universal gas constant, and we have obtained it from PV is equal to nRT. PV is equal to nRT. Here P is the pressure of the gas, V is the volume of the gas, N is the number of moles, and T is the absolute zero temperature of the system, and R is the universal gas constant. The value of R is same for all gases. Value is same. Value is same for all gases. Value is same for all gases, therefore it is called universal gas constant. The value of R depends upon the unit used to express. Its value depends on unit used to express pressure, volume and temperature. Hence we recall STP conditions for determining value of R. पहला R in SI unit. R in SI unit, that is in joules. Value of R can be calculated by using the SI units of pressure, volume, temperature. R is equal to, here again R is equal to PV by NT. ठीक है, R is equal to 10 raised to power 5 Pascal into 22.7 into 10 raised to power minus 3 meter cube divided by 1 mole into 273.15 Kelvin. ठीक है, तो उसकी वैल्यू होती है, R की वैल्यू यहाँ पे आती है, R की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल. ठीक है, यहाँ पे R की वैल्यू आ रही है लाइक दिस. अब R दूसरा वाला, जब R if pressure is expressed in atmosphere and volume in liter or decimeter cube and temperature in Kelvin, then value of R is equal to 1 atmosphere into 22.4 divided by 1 into 273.15, that is equal to 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल. वैल्यू ऑफ आर ये वाली आई, एक दूसरी लीटर एटमॉस्फेयर में, जूल्स में ये वाली आई, लीटर एटमॉस्फेयर में ये वाली आई. फिर और देखते हम लोग. दो इसमें अपनी यूनिट्स आर की वैल्यू निकली है. एक तो निकला है अपना जूल्स पर केल्विन पर मोल, और एक निकला है अपना लीटर एटमॉस्फेयर. ठीक है, अब देखते हैं थर्ड वाला. जब आर कैलोरीज में क्या होता है, आर इन कैलोरीज. ठीक है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल्स. R is equal to 8.314 divided by 4.184.
that is equal to 1.987 2 calories per Kelvin per mole. While using ideal gas equation, one should use constant unit. मतलब एक कांस्टेंट यूनिट यूज करना पड़ेगा. द मोस्ट कॉमन यूनिट्स ऑफ आर गिवन इन द इस टेबल. दैट इज जब प्रेशर, वॉल्यूम, एन एंड टी, जब ये पास्कल में रहता है, व्हेन इट इज़ इन पास्कल, इट इज़ इन मीटर क्यूब, ये मोल्स और टेम्परेचर केल्विन में, तो आर की वैल्यू होती है 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल. जब ये एटीएम में होता है, ये डेसीमीटर क्यूब में होता है ना. मोल्स केल्विन 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर में, ये लीटर में, ये मोल्स में, ये केल्विन में, तो इसके लिए 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर. उसकी वैल्यू कैसी होना चाहिए? कंसिस्टेंट. While using ideal gas equation, one should use consistent units. Consistent unit. One should use consistent units. Okay. Expression for molar mass. Expression for molar मास. ये क्या बोल रहा है अपने को? लॉ आइडियल गैस इक्वेशन, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी. एन इज इक्वल टू पी वी अपॉन आर टी. एन इज इक्वल टू एम अपॉन एम. सो एम अपॉन एम इज इक्वल टू पी वी अपॉन आर टी. और m इज इक्वल टू एम आर टी बाय पी वी. ये भी एक इक्वेशन हो गया हमारा. ठीक है. नाउ कंबाइन गैस लॉज. कंबाइन गैस लॉज. कंबाइन गैस लॉज क्या बोलते हैं हमारे? नाउ वी आर यूजिंग कंबाइन गैस लॉज. ठीक है. कंबाइन गैस लॉज है, अगर हम कंबाइन करते हैं सारी गैसेस को, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं this is ideal gas equation and is used in the form of combined gas laws. We can use like this: P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2. We can use this expression also. ठीक है. उसमें this is for one state and this is for final state या second state. अगर हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं, अ सैम्पल ऑफ N2 गैस. N2 गैस का सैम्पल है, उसको हमने एक फ्लेक्सिबल कंटेनर में, 9 लीटर के फ्लेक्सिबल कंटेनर में स्टोर किया है एट 300 केल्विन एंड एट प्रेशर ऑफ 1.5 एटमॉस्फेयर. ठीक है. द गैस वॉज compressed टू अ वॉल्यूम ऑफ 3 liter, compressed to volume of 3 liter. Now heat was added until the temperature reaches at 600 Kelvin. What is the new pressure inside the container? What is the new pressure inside the कंटेनर? ठीक है. अब यहाँ पे है अपना
V1 is equal to 9 liter, V2 is equal to 3 liter, P1 is equal to 1.5 atmosphere, T2 is equal to 600 Kelvin, T1 is equal to 300 Kelvin, and what is the P2? क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको P2 के लिए? एक इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। अगर हम पूरे वैल्यूज़ यहाँ पे डालते हैं तो अपना ये आता है 1.5 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 300 इज इक्वल टू P2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 600। तो ये आता है 980 m। क्या आता है ये? 980 m। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। और दूसरा, फाइंड द टेम्परेचर इन, एक और न्यूमेरिकल ले सकते हैं, फाइंड द टेम्परेचर इन सेल्सियस एट विच वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ 1 मोल ऑफ N2 gas become 10 decimeter cube and 2.46 atmosphere, है ना? P is equal to 2.46 atmosphere, V is equal to 10 decimeter cube, N is equal to 1, R is equal to 0.0821 decimeter cube. What is T? PV is equal to nRT. T is equal to PV upon nR. That is equal to 2.46 into 10 divided by 1 into 0.0821, that is equal to 299.6। अब हमको पूछा है डिग्री सेल्सियस में, 299.6 माइनस 273.15, that is equal to 26.48 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ आवर आंसर। ठीक है, उसके बाद में लेते हैं हम लोग नेक्स्ट वाला टॉपिक, रिलेशन बिटवीन डेंसिटी, मोलर मास and pressure. Ideal gas equation can be written as PV is equal to nRT. On rearrange this, N by V is equal to P upon RT. ठीक है, बट वी नो दैट N इज इक्वल टू क्या होता है? N इज इक्वल टू होता है मोलर मास मास गिवन अपॉन मोलर मास। देयरफॉर M अपॉन M इंटू V इज इक्वल टू P अपॉन RT, दैट इज इक्वल टू D by M is equal to P अपॉन RT, और M by V is equal to होता है डेंसिटी ऑफ द गैस। Therefore, rearranging the equation, we can write down dRT divided by P. dRT divided by P. Now, ये जो इक्वेशन है, इससे हम लोग ये वाला जो इक्वेशन है, इससे हम लोग निकाल सकते हैं कि बॉयल्स लॉ कैन बी स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एज, बॉयल्स लॉ कैन बी स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एज एट constant temperature, pressure of given mass of gas, given
mass of gas directly proportional to its density, to its density। ठीक है, अब एक नया वाला लॉ ले सकते हैं हम लोग, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल pressure। Dalton's law of partial pressure। John Dalton not only put forth the atomic theory but also gives several contributions to understanding the behavior of gas। बिहेवियर ऑफ गैस भी उसने स्टडी किया है ना। तो प्रेशर, अगर प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं अपन एक गैस पे इन अ मिक्सचर ऑफ 2 or more gases, it is called partial pressure। It is also the pressure that each gas would exert if it is present alone। Dalton's put forward law that total pressure of a mixture of two or more non-reactive gases is the sum of partial pressure of individual gases। in mixture। Mathematically, Dalton's law can be given as P total is equal to P1 plus P2 plus P3। These are all the partial pressure of individual gases। Partial pressure and mole fraction। हम लोग एक और रिलेशन ले सकते हैं, पार्शियल प्रेशर and mole fraction। Partial pressure and mole fraction। We know that the pressure of pure gas is given by ideal gas equation, that is P is equal to nRT by V। That is P is directly proportional to n। बाकी के टर्म्स अगर अपन कांस्टेंट कर देते हैं, कॉन्सिक्वेंटली द प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर इज proportional to its amount in that mixture। Now this law can be applied as P1 of a mixture of gas at constant volume and temperature is equal to the sum of the pressure that individual gas exerts in the mixture। ठीक है, तो हम लोग ये ले सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस कैन बी P1 is equal to N1 RT by V। P2 is equal to N2 RT by V। ठीक है, इस तरह से हम लोग ले सकते हैं, P total is equal to N1 RT by V plus N2 RT by V plus N3 RT by V। ठीक है, इस तरह से हम लोग ये प्रेशर ये कर सकते हैं।
और अपन आगे ले सकते हैं इसको आगे अपन ले सकते हैं, दैट इज इक्वल टू आर टी अपॉन वी, और N1 प्लस N2 प्लस N3 दैट्स इक्वल टू आर टी अपॉन वी इंटू N टोटल। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी इंडिविजुअल गैस in the mixture is given by N1 is equal to N1 plus N2 plus N3, that is equal to N1 upon N total। ठीक है, अब N1 is equal to P1 RT upon V, N total is equal to P total RT upon V। ठीक है, by combining above equation we can write down N1 upon N total is equal to मोल फ्रैक्शन, और लिख सकते हैं अपन P1 डिवाइडेड बाय RT बाय V अपॉन P टोटल divided by RT upon V, that's equal to P1 into P total। Therefore it is followed that P1 is equal to X1 P total and P2 is equal to X2 P total, P3 is equal to X3 P total, and so on। Thus, partial pressure of gas is obtained by partial pressure of gas is obtained by multiplying the total pressure of mixture by mole fraction of that gas, by mole fraction of that gas। Where is Dalton's law applicable? The most important gas mixture is of course the air around us. Dalton is useful for the study of various phenomena in air, including air pollution।